Okay, so after some very rigorous derivation that we've done previously, we're going to see a few more properties of Legendre's polynomial. I hope in the previous lecture you might have got the derivation part. If at any point if you don't get it, please feel free to ask me. However, this was a quite long derivation, so that is why I actually refrain all these things from doing. Because see, in any case in exam or otherwise also in physics, we're not concerned about how things are getting derived. For me, yes, you should be concerned, but mostly you should be at least remembering the functional forms and some of the very important properties. So in any case, what whatever discussion we did in this like previous lecture and one before, it boils down that we must remember that our Legendre's polynomial are orthogonal to each other on an interval -1 to +1, such that if I want to find integration pmx pnx dx, it is equals to 2 upon 2n plus 1 Kronecker delta m. Okay, so this is one thing that one needs to see. Is that clear? Now let us move to a few more properties as such. Okay, so let us move to some properties as such. Okay, and we'll do very important properties only, because again that is what we want to do. Like otherwise there are too many things to be done in Legendre's polynomial itself. So let us first concentrate on one of the properties, and most of the properties you'll find that can be done even by Rodrigues formula. So let us try to find what will be the I'll write it here. So find what will be the integration from -1 to 1. You can take it as a question or you can write it as a property, whichever way it suits you. Fx, and then you have Pn x dx. It is equal into writing -1 raised to power n divided by 2 की power n, and then you have this n factorial, and this is -1 to +1 x square -1 की power n fn x dx. This is what we've used in the previous lecture. Okay, this is the property that we actually derived in the previous lecture somehow. Okay, is that clear? Let me, yeah, okay. So what we'll do, so what I'll do is I'll try to use this Rodrigues formula. So I'll try to use the Rodrigues formula. So I already know that my Rodrigues formula for px is 1 upon 2 की power n, and then you have n factorial dn upon dxn x square -1 raised to power n, right? So Rodrigues formula is one such formula which will be quite handy when you are trying to derive these properties which I'm going to list today. So a few properties that one needs to remember, and also we'll see a few more questions as they are asked in the examination. So how to go about this? So this is something that I've already derived. So if you're not following, so basically what was happening was कि यहाँ पर किया था, जहाँ पे fx था वहां पे आपने क्या रिप्लेस किया था, pn ही तो रिप्लेस किया था. So if I replace pn here, so I'll get eventually this 2 upon 2n plus 1, right? तो खुद सोचो ये जो हम कर रहे हैं eventually what was that? So यही तो था, यहाँ पर pn dash ही तो किया है, तो fx की जगह आपने क्या रिप्लेस किया, pn किया, और ये वो चीज है जो इसके बराबर थी, and this was equivalent to writing this. So जब यहाँ fx से pn replace करोगे तभी तो यहाँ fx से pn आएगा. And eventually you find that if you replace pn here, you'll get this entire integral as 2 upon 2n plus 1. So 2 upon 2n plus 1 is equivalent to writing pn square. So integration from -1 to 1, pn square is 2 upon 2n plus 1. Is that clear? तो थोड़ा सा लंबा derivation हो गया पिछला वाला, but overall understand these are not that difficult things. Okay, now on the same lines, I'm asking, prove this property, like fx, any function, any continuous differentiable function, if it's n times differentiable. So here fx is a
So Fn belongs to class of functions, class of n times differentiable functions, n times differentiable function, which are continuous as well on the interval -1. So this is how we write in short form. So C raised to power n, what it means? It means class of n times continuously differential functions on the interval -1. Okay. Is that clear? So how to go about it? कैसे करें? So let us use the Rodrigues formula. So Rodrigues formula says write Pn as 1/2 factorial -1 to 1. And this is your fx. I'm writing fx as it is. Now here you have dn upon dxn. And then you have x square minus 1 raised to power n dx. Is that clear? I'm doing the left hand side part. Okay. So this will be 1/2 n factorial and try to integrate it. So this will be fx and this will be dn minus 1, and then you have x square minus 1 raised to power n from -1 to +1, and then again minus integration. This iska derivative kya hoga? So it will be derivative f dash x, and then again integral dn minus 1 x square minus 1 raised to power n dx. Is that clear? This will go to 0, forget about it. Again, if you do the same, again, if you take this step, so what you'll get whatever is a constant. So there would be a constant for, I'm not that much concerned about it. So this will be like f dash, and then it will be dn minus 2 x square minus 1 raised to power n from -1 to +1. Again, it will go to 0. And now you have minus plus here. So this will be, I'll write -1 plus square here. Integration -1 to +1. Instead of f dash, now you have f double dash x dx. And then you have dn minus, I should write 2. And then you have x square minus 1 raised to power n dx. Is that clear? And continue likewise, what you'll get? You'll get -1 raised to power n from -1 to +1, and then you have this f nth derivative, and then you have d0. So I'll not write d0, I'll write x square minus 1 raised to power n dx. Is that clear? ये चीज समझ में आई? मैंने पहले भी किया है, देखो ध्यान से. और यहीं पे मैंने तुम्हें कहा था कि जहां fx के pnx रखोगे तो what it will be? It will be -1 to 1 pn square x dx, which will be equivalent to writing pn nth derivative x square minus 1 into dx, and this is the quantity. Eventually we found out that. Is that clear? अच्छा, एक वो भी तो रह गया 2. Sorry. Is that clear? So this is what we had to show, right? Now exam में क्या आएगा? ये नहीं आएगा. Exam में anybody would ask you what is -1 to 1 x की power n pn x dx. So what it will be? So we already know, if I find an integration fx, and if I write here pnx dx, and if my function fx is n times differentiable, then this entire thing is equivalent to writing -1 raised to power n upon 2 की power n, and then you have this n factorial. Right? ऐसे कुछ किया था भी थोड़ी देर पहले तो किया ये चीज. So it is equivalent to writing this. और हम जान रहे हैं कि now your fx has been replaced to f of x. Sorry, fx has been replaced to x की power n. So fx अगर x की power n हुआ, if you replace x की power n here, so what you'll get? You'll simply get -1 raised to power n upon 2 की power n factorial. And if I replace fx equal to x की power n, then what I will get? I'll simply get integration -1 to +1. If I differentiate x की power n times, I will simply get n factorial, and then I will get x square minus 1 की power n dx. Is that clear? और इसका मतलब ये हुआ, it is equivalent to writing -1 की power n upon 2 की power n factorial into n factorial from -1 to +1, and you have x square minus 1 की power n dx. What you can do, you can take -1 from here, so it will give you 1 upon 2 की power n -1 to +1, 1 minus x square की whole power n dx. Is that clear? And this you can write 2 upon 2 की power n from 0 to 1, 1 minus
x square की power n dx. Is that clear? Is that clear or not clear? And this is something that we've already done, so I'm not going to repeat it. So I know. So I already know. कहाँ पे था ये last. This is it. So we already know that. Okay, we already know that this this integral that we are trying to find. चलो मैं वापस करते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा otherwise. Okay, so this integral, if you want to find how to find this integral, I already told you that just try to write let x equal to cos theta or sin theta. So if you let x equal to sin theta, what it will come? So the required integral that you want to find is equal to -1 to 1, and here you have x की power n, and then you have this pn x dx, and this is equivalent to writing 2 upon 2 की power n integration from 0 to 1 minus of x square की power n, and then you have dx, right? ऐसे कैसे करते हैं? जहां पर भी x है, just replace sign so that things will become easy for you, and this will be like equivalent to writing 2 upon 2n, and this will be integration from 0 to pi by 2, and this will be equals to what? It will be equals to cos की power 2n theta, and then this dx will again give you cos theta d theta, and this is equivalent to writing 2 upon 2n, and this is I 2n plus 1, and I know my I 2n plus 1 was equivalent to, इसको paste कैसे करता है I don't know. ठीक है, so your I 2n plus 1, you know, this is your I 2n plus 1, right? So I 2n plus 1, you know, this is equal to I 2n plus 1, right? So if this is your I 2n plus 1, what you will get? You will simply get this as, so this 2 की power n and this 2 की power 2n would get cancelled. So this is 2 into 2 की power n. So this will be 2 की power n plus 1. Then there is n factorial का square. I'll write n factorial का square as it is. And then if I divide, so this is like 2n factorial into 2n plus 1. So अगर 2n plus 1 को 2n factorial से multiply करोगे तो क्या आएगा? It will be simply 2n plus 1 factorial नहीं होगा ये चीज, खुद सोचो. 2n plus 1 into 2n factorial. So 2n plus 1 factorial नहीं हो जाएगा. 2n plus 1 factorial को expand करो क्या आएगा? 2n plus 1 into 2n factorial तो आएगा. Is that clear or not clear? So eventually, if one asks you in the examination this thing, so this will be equal to this. Is that clear? So these are some very important properties that we've done. A few more things that need to be done. So एक चीज और बताओ. एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं. Again, a difficult one only. Okay, try to prove this. What will be the value of Pn minus half? So what will be the value of Pn minus half? And you have to prove this will be equals to P naught minus half into P2n 1 by 2 plus E1 . So how to find such properties? So ये exam में आ सकता है. So if one asks you what is Pn minus half, is that equal to whatever is written on the right hand side? Like it is equal to. So exam में क्या करोगे वो बताओ. Exam में just take n equals to 2, so that things will become easy for you. But then you need to remember at least P4. Or you take n equals to 1. So that may solve your problem. For exam, I'm saying just take n की कोई ऐसी value whose Legendre polynomial you already know. So that will solve the problem, because otherwise these are too difficult problems for examination. So let us proceed. Let us proceed how to do these questions. Like how to do these questions, let us do them. So answer. So I already know that my generating function for the Legendre's polynomial is given by 1 upon
रूट ओवर okay 1 minus 2xt plus t square. This will give you if you try to binomially expand it, you will get this. Is that clear? Now what is asked, it is asked that you want to find minus half. ये पेन बहुत बनता है. चलो ठीक है, you are asked to find what will happen if I replace x by minus so or plus one or whatsoever, like, or यहाँ पर if you'll see there are options given in half also and minus half also. Okay, so what I'll do, I'll write x equals to 1 upon 2 first. So if I replace x equal to 1 upon 2, what I'll get? I'll simply get summation n equal to 0 to infinity pn 1 upon 2 and then t की power n is equivalent to writing, I'll write it ऊपर ही लिख देते हैं 1 minus t plus t square की power minus 1 by 2. Is that clear? This is your equation number 1. And if you replace x equal to minus half, if you replace x equals to minus half, what you'll get? You'll simply get summation n equal to 0 to infinite, and here you have pn minus half, and then you have t की power n, and this is equivalent to writing 1 plus t square की power minus half. और अगर थोड़ा सा बचपन का याद है तो I'll write it here. 1 plus t square plus t की power 4 is equivalent to writing 1 plus t square into 1 minus t plus t square. तुम चाहो तो इसको करके देख लो. 1 plus t square के ग्रुप लो तो 1 plus t square plus t, और ये है 1 plus t square minus t, तो हो जाएगा a square minus b square वाला फॉर्मूला खोलोगे, you will get this. Is that clear? करो इसको बैठ के आराम से. 1 plus t square plus t लिखो और 1 plus t square minus t लिखो. चलो मैं करा ही देता हूँ तो फिर कोई दिक्कत होगी. सो इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है. सो इस एक्सपेंशन को करके बता रहा हूँ. सो 1 plus t square plus t लिखो और एक बार लिखो 1 plus t square minus t. So what you'll get? You'll get 1 plus t square का whole square minus t square. इसको expand करो, ये आएगा t की power 4 plus 2t square plus 1 minus t square. ये cancel. You'll get 1 t की power 4 plus t square plus 1. So 1 plus t square plus t की power 4 is equal to this. Is that clear? हाँ या ना, जल्दी बोलो. हाँ, आ गया भैया. 1 plus t square plus t की power 4. Okay, okay. So now I know if I multiply these things, I'll get this. If I multiply these things, I will get this. So what I'll do, I'll take another trick I'll play. I'll simply write that this is root over 1 minus 2xt plus t square is given by summation tn t की power n equal to 0 to infinity. Now what I'll do, I'll replace, instead of t, I'll replace t square. So instead of t, I'll replace t square, and what I'll get, I'll simply get 1, sorry, ये ऐसा पेन क्यों गया? So I will simply get summation pn t की power 2n is equivalent to और एक काम करो and replace x by half. So लाइफ इजी हो जाएगी हमारी. Replace x by half करें minus half. हमने देखे रखा था, चेक करें. x को pn minus half दे रखा ना. So ये वाला जो पार्ट है, सॉरी, pn minus half. ठीक है. देखो यहाँ 2n आ रहा है, यहाँ 2n minus 1 आ रहा है. वो कैसा आ रहा होगा 2 मिनट में बताता हूँ, पर एक बार एक काम करो, जस्ट रिप्लेस x equal to minus half and t की जगह t square. So what you will get, ठीक है, what you will get that I'm doing, so it will be p. यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बट है ना, और ऐसा मत सोचना कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा. we'll do certain questions which have come in the examination also. t की power n की जगह हो जाएगा t की power 2n, and this will be equivalent to writing 1 minus half करो 1 plus t square plus t की power 4 की power minus. Is that clear? This is your equation number 3. Is that clear or not clear? बेटा, is that clear or not clear? ये चीज समझ में आई नहीं आई? राइट हैंड साइड कैसे? ओके ओके. आपने क्या किया, x के माइनस आप रिप्लेस करो, कर दिए, राइट, एंड t की जगह t स्क्वायर रिप्लेस करो. तो यहाँ पे क्या आएगा, t की पावर 2n, यहाँ पे t स्क्वायर आएगा और यहाँ पे t स्क्वायर का स्क्वायर नहीं हो जाएगा. हाँ ठीक है, ठीक है. ठीक है. मेन चीज समझने की कोशिश करो. ये मैं क्यों कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस बिकॉज इफ आई मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स आई विल गेट दिस टर्म. If I multiply these two terms, देखो 1 plus t square plus
1 plus t square or 1 minus t plus t square. If I multiply with both of these terms, I will get this term. Is that clear? Not ये Yes, दोनों sir. term, ठीक है? So I'll do what? I'll do a multiplication of 1 and 2. So multiply 1 and 2. ठीक है? So multiply 1 and 2. So I know on both of the sides, the right hand side, if you see, right hand side will be equivalent. You can see if I replace, if I multiply these two things, 1 plus t square minus t की power minus of 1 plus t square plus t की power minus of, multiply them. So this is something that you will get. So I'll equate the left hand portions. I'll equate the left hand portion, and left hand portions will be equal to what? So left hand portions will be equivalent to writing. I'll write it here. Summation n equal to 0 to infinity. This is Pn. This is minus half, and this is t की power 2n, and this is equivalent to writing summation n equal to 0 to infinity, and then you have Pn. I think you had 1 over 2 t की power n at one in one of the braces. Another braces included n equal to 0 to infinity, Pn minus half t की power n. Is that clear or not clear? देख लो इसको ध्यान से Clear, देखो. sir. Clear. चलो गुड. अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं what needs to be seen in both of these bracket, like both of these parentheses, like here this parenthesis and this parenthesis, when it multiplies, we want to find what is the coefficient of t की power 2n. This is what we are interested in, right? Isn't it? Because the coefficient of t की power 2n would correspond to Pn minus half. Is that clear? On the right hand side, these parentheses will get multiplied. This is the first parenthesis, or this is the first bracket or the second bracket. If I multiply both of them, and if I try to find the coefficient of t की power 2n, will it not be equivalent to writing Pn minus half? So for example, if you expand this term on the left, so you'll get all sort of terms. You'll get t की power 0, then you'll get t की power 1, you'll get t की power 2, you'll get t की power 4, then you'll get t की power 6, you'll get t की power 8. We are interested in t की power 2n. So t की power 2n का coefficient क्या है? Pn minus half. And this is what we want to find कि Pn minus half क्या इसके बराबर होगा या नहीं होगा? Is that clear to you? नहीं समझ में आया? I have okay. अंडरस्टैंड द पॉइंट कि आप कर क्या रहे हैं, और ये सब चीजें बहुत बहुत मैथमेटिकली अपना पान लग जाएंगे. कुछ सोचो, किसी दो चीज का प्रोडक्ट लिखा जा रहा है, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा काम. सो यू व्हाट यू वांट टू फाइंड कि विच, लाइक इसका जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 2n. सो इसमें जो भी टी की पावर 2n का कोफिशिएंट है, इधर भी टी की पावर 2n का कोफिशिएंट इक्वेट हो जाएगा, एंड थिंग्स विल बिकम द सेम. And this is due to the orthogonality relation. Otherwise नहीं होता ये, because uh, Legendre polynomials are orthogonal to each other, so you can compare them out. So what I'll do, I'll simply write here summation n equal to 0 to infinity. I'll write एक बार के लिए वापस लिख रहा हूँ Pn minus half, and I'm writing t की power 2n. और इधर से सोचते हैं क्या क्या टर्म्स आ सकते हैं, तो मैं यहाँ से क्या क्या टर्म्स देख रहा हूँ. तो पहले मैं n equal to 0 रखता हूँ, तो क्या आएगा? P0 half t की पावर 0, एंड देन n इक्वल टू 1 आएगा, तो p की पावर 1, p की पावर 1 p1 t की पावर 1. देन n इक्वल टू 2 रखो, तो कितना आएगा? p2 t स्क्वायर. एंड देन आई विल राइट लास्ट थ्री टर्म्स ऑल्सो. सो लास्ट थ्री टर्म्स विल बी p n minus 2 1 upon 2 t की पावर n minus 2. Then I will write p n minus 1 1 by 2, and then I will write t की power n minus 1, and then I will write pn 1 upon 2, and then I will write t की power. And this is one, and this is another one. So if you replace this, so p0 minus half t0, then I have p1 minus half t की power 1, and then instead I'll write only two terms, जिससे कि थोड़ा सा जगह की constraint है. I should have written it in nice manner there also. चलो कुछ बात नहीं, इसको थोड़ा आगे खिसका देते हैं. ठीक है, इसको आगे खिसका देते हैं. So this is like, okay, so यहाँ पर मैं ऐसी चीज को लिख दे रहा हूँ.
ठीक है। सो एक काम करते हैं, ये मैं वापस यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इज, ये देखो, सो अब यहाँ से थोड़ा ध्यान देखना, तो ये हो जाएगा पी नॉट minus half and you have t raised to power 0, you have p1 minus half t raised to power 1, you have p2 minus half t square, and then you can write p and n minus 2, n minus 2 minus half, and then t की power n minus 2, then you have p n minus n minus 1 minus half, and then you have pn minus half, and then you have tn. Is that clear? यहाँ तक समझ में आया, ऊपर से चला गया? यस। ओके, यहाँ तक समझ में। अब देखो इसमें जो राइट हैंड साइड में है, व्हाट ऑल डू यू थिंक वुड कंप्राइज पावर टू, व्हाट ऑल टर्म्स डू यू थिंक वुड कंप्राइज टी की पावर 2n? थिंक अबाउट दैट। व्हाट ऑल टर्म्स वुड कंप्राइज पावर टी की पावर 2n? व्हाट ऑल टर्म्स वुड कंप्राइज पावर टी की पावर 2n? दिस इज व्हाट इज माय क्वेश्चन। जस्ट ऑब्जर्व एंड थिंक अबाउट इट। जस्ट ऑब्जर्व एंड थिंक अबाउट इट। और हैव आई डन सम मिस्टेक अबाउट इट? एक बार देखते हैं ऊपर जाके। What all you think would comprise of power? कि क्या गलती करी अपन ने आज जल्दीबाजी में? एक मिनट देखते हैं, 2 मिनट मुझे इधर तो। लास्ट वाली करेंगे ना 2n। नहीं नहीं, सही किया हम लोगों ने अभी तक तो। आई डोंट थिंक देयर इज अ मिस्टेक एट ऑल। दोनों में जो लास्ट टर्म से tn वाली, वही 2 की t की पावर 2n लाएंगे। हम्म। एक बार देखते हैं कहाँ फंसे हम लोग। अच्छा, देयर आर इन्फिनिट टर्म्स ना, ऐसा थोड़ी है कि इट विल नॉट कंटिन्यू। एक और चीज भी तो हो सकती है, देखो, एक और चीज भी तो हो सकती है। दिस इज इन्फिनिट सीरीज, राइट? हम लोगों ने तो यहीं तक रोक दिया इसको। टी की पावर 2, टी की पावर एन तक थोड़ी रुकेगा। इट विल गो ऑन। एक मिनट, there's a mistake that we've done here. Because this is an infinite series, so it will go on, ना? एक मिनट रुको, मेरे को थोड़ा सोचने दो। कहाँ गया अब ये? तो यार जगह की कमी होती है ना, समझ नहीं आता क्या है ये। 2 मिनट रुको, मेरे को 1 मिनट टाइम दो। टिक 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 टिक, दिस इज रॉन्ग। Because see, this is an infinite series. You cannot write it in this। 1 मिनट रुको, थोड़ा सोचते हैं अपन, रुक जाओ। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक तो आई डोंट थिंक देयर इज अ मिस्टेक टिल नाउ। देखो एक मिनट रुको, एक काम करते हैं, ये तो समझ में आ गया, पी एन माइनस हाफ टी की पार्ट 1, दिस विल बी इक्वल टू राइटिंग एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिट। यहाँ पर क्या था, पी एन 1/2, एंड दिस वाज टी की पावर एन, वन पैरेंथेसिस, अनदर पैरेंथेसिस वुड बी समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी पी एन माइनस हाफ एंड देन टी की पावर एन। ठीक है, ये तो है। अब अपन एक काम करते हैं, छोड़ो सारी फालतू बातें, अपन दिमाग खर्च करते हैं इधर से, राइट हैंड साइड से दिमाग खर्च करते हैं। इसलिए ये चोचलेबाजी मेरे से सेट ही नहीं हो पाती कि मैं नीला पेन लूं, लाल पेन लूं, भाड़ में जाऊं। ठीक है, आ जाओ। अब अपन एक काम करते हैं, वी विल थिंक ऑफ इट। सी, एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है यहाँ से पावर 2n का टर्म है और यहाँ से पावर 0 का टर्म, राइट? वो दोनों अगर मल्टीप्लाई होंगे तो टी की पावर 2n ही क्रिएट होगा। इज दैट क्लियर? देखो, वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं कि यहाँ से टी की पावर 2n का टर्म है, बिकॉज हियर हम लोगों से ध्यान नहीं था, यहाँ इन्फिनिट होता है। सो ये तो इन्फिनिट सीरीज खुलेगी ना, वो टी की पावर n पे जाके थोड़ी रुक जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? भैया आवाज नहीं आ रही है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट राइट नाउ? नहीं आ रही आवाज अभी? एक सेकंड में वापस ज्वाइन करती हूँ। हम्म, ओके। सो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली अभी जस्ट पहले जो हम कर रहे थे उसमें गलती ये हो रही थी कि यहाँ इन्फिनिट है ना, सो देर आर इन्फिनिटली मेनी टर्म्स, राइट? सो हम लोग वी कैन नॉट कंस्ट्रेन इट टू पावर टी की पावर एन, राइट?
Is that clear? Okay. Okay. This is a mistake that we were doing, right? Because see, in any case, you can see on the in the question itself, you can see they're comparing P to N. So that is what I was thinking कि P to N आया कैसे? So probably P to N probably नहीं मतलब P to N क्यों आएगा? खुद सोचो. Here it is an infinite series. Here it is an infinite series. We want to see what all can result in T की power 2n. So I'll write T की power 2n here. अब हम सोचते हैं कि क्या T की power 2n हो सकता है? Possibilities क्या है? या तो यहां से T की power 2n का टर्म है और यहां से T की power 0 का टर्म है, which can be the case. See, n equal to 0 प्लेस करो तो T की power 0 नहीं आएगा यहाँ पे. And if it multiplies with T की power 2n term here, so overall term will give you T की power 2n, isn't it? Yes or no? Yes. पक्का समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? हाँ मैं भैया. you expand this term to infinite terms हैं. हम लोगों से जो गलती हो रही थी, n terms नहीं है, infinite terms है. Here also there are infinite terms. Try to see कि यहाँ t की power 0 आता है और अगर यहाँ t की power 2n आता है तो overall t की power 2n नहीं हो जाएगा. So one of the combinations can be कि यहाँ पे t की power 2n हो. So this is one of the terms which will give you t की power 2n. Another term क्या हो सकता है? यहाँ 2n minus 1 हो और यहाँ t की पावर 1. इज दैट क्लियर? सो दिस विल बी p. जैसे जैसे यहाँ पे रखोगे वैसे वैसे यहाँ रखना पड़ेगा. इफ हियर इज एन n, here also there would be n. So p2n minus 1 1 by 2 and then there would be p naught, नहीं p naught नहीं, p1 minus 1 by 2. Is that clear? हाँ या ना? फटाफट बोलो बेटा. Similarly this is p हाँ भैया. 2n minus 2 1 by 2 and this will be p2 minus 1 by 2. And similarly if you go all along, अब रिवर्स द टेबल, यहाँ पर भी तो हो सकता है टी की पावर 2n का टर्म और फिर यहाँ टी की पावर 0 वाला टर्म पकड़ लो तो इट कैन बी. और यू कैन टेक 1 हियर. सो p1 1 by 2 and you can write p 2n minus 1 minus 1 by 2 and then you can write plus p naught 1 by 2 and this can be p2n minus 1 by 2. So overall you can see that your pn 1 by 2 is equivalent to writing p2n 1 by 2 p naught minus 1 by 2 plus p2n minus 1 1 by 2 minus 1 1 by 2 and p1 minus 1 by 2, so on and so forth. Last में लिखोगे p1 1 by 2 and this is p2n minus 1 minus half and then plus p naught 1 by 2 and this is p2n minus 1 by 2. Is that clear or not clear? अब समझ में आया ये बात? थोड़ा सा हाँ लंबा भैया. लंबा क्वेश्चन था बट दिस इज हाउ इट इज. Right. ऐसे ही होगा और कोई रास्ता नहीं आ रहा है इसको करने का. आई होप इट इज क्लियर. हाँ भैया. Now let us see a few questions in from the exam so that थोड़ा सा तुम्हें लगे कि you may be able to do them in their exam. वहाँ pn माइनस हाफ लिखा हुआ है. हाँ बेटा. लेफ्ट साइड में क्वेश्चन में pn माइनस हाफ लिखा हुआ है. हाँ सॉरी p n minus of फर्क थोड़ी पड़ेगा. p n minus of here. Okay, so हाँ pn ठीक. minus half is p2n 1 by 2 p naught. मतलब करना कुछ नहीं था, हम लोग क्या जल्दीबाजी कर रहे थे ना, तो t की पावर n नहीं देखना है हमको. सी हियर देयर आर इनफिनिट टर्म्स. सो t की पावर 2n भी तो आएगा कहीं ना कहीं. तो आप बस ये देखो t की पावर 2n होगा तो यहाँ t की पावर 0 वाला टर्म पकड़ लो. यहाँ t की पावर 2n minus 1 है तो यहाँ t की पावर 1 पकड़ लो, या फिर यहाँ t की पावर 2n है तो यहाँ t की पावर 0, यहाँ t की पावर 2n minus 1 तो यहाँ t की पावर 1. उनको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट t की पावर 2n. सो दिस इज व्हाट इट बी. ओके. Now let us do ठीक a है. few questions from your exam so that तुम्हें लगे कि you can do them up. They're easy, they're quite easy, don't worry. So most of them are quite easy. I'll take the difficult one first. So we'll see one of the questions that was asked in the exam. Okay, in the GEST exam. So I'll take one of the question that was asked in the GEST exam. So question says, for which of the following conditions, I'll write, and I'm speaking, which of the following conditions does the integral, what I'm writing here, vanish for m not equal to n
where Pm and Pnx are Legendre's polynomial of order Mn. So under which conditions, under which of the following conditions does the integral vanish? And what is that integral? Integral I've already written. And it is given that m should not be equal to n. So option number 1, it was given all m not equal to n. Option number 2 given was m minus n must be an odd integer. Option number C was given to you, m minus n is an non-zero even integer, non-zero even integer. So they will not take 0 here, non-zero even integer. And option number D, they're giving you that n should be equals to m plus minus 1. So this is what has been answered. I think this is a quite recent question. So they're asking you, under which of the following condition does this integral vanish? And instead of -1 to 1, now they've given you 0 to 1 pmx, pnx, dx. And they want to know for which of the following conditions does this vanish? Are you getting my point or not getting my point? Is that clear or not clear? Okay. So how to do? One of the ways can be to just take some of the help of the option and do them. So one of the ways can be to just take options and do them. So I'll give you 1 to 2 minutes. You try to replace, instead of m and n, 1, 2, 3, 4, and just try to figure out. I'm giving you 2 minutes for the same. Try to use different values of m and then try to find the answer. I mean, is that clear? Question to clear enough? So let us take the help of our orthonormative property. So that says Pm x Pn x dx is equal to 0 if m is not equal to n, and that is what we have to take. We have to take m not equal to n, right? This is what is given to us. But the integral has been changed. Now it is not -1 to 1, it is 0 to 1. Is that clear? So what I'll do, I'll take a few cases. The first case that I can take is that, let's say both m and n are even. Let us say that both m and n are even. So this -1 to +1, Pm minus x, x Pn x dx, and मान लेते हैं m is not equal to n. मान लेते हैं m is not equal to n. Then it will be equals to 0. Isn't it? Yes or no? Yes. फटाफट बोलो, ठीक है? और अगर pmx even है तो pm minus x क्या हो जाएगा? Simply it will be equals to what? It will be equals to pmx. और pn minus x किसके बराबर होगा? It will again be equals to pnx. Is that clear? Is that clear or not clear? ठीक है? So what I'll do, I'll separate this integral into -1 to 0. एक पार्ट अलग बना दिया और एक पार्ट आपने इसको अलग कर दिया. This is what I am doing. बाकी एग्जाम में बच्चे ऐसा नहीं करते. एग्जाम में they will do in the way I suggested to you. Okay. Now, instead of x, replace minus x. So instead of x, if you replace minus x,
So this will be minus dx. This in 1 to 0 की बजाय 0 to 1 हो जाएगा, and this will be pm minus and pn minus, and then this will be 0 to 1 pmx pnx dx. Is that clear to you? ये चीज समझ में आई? मैंने कुछ नहीं किया इस प्रॉपर्टी को लेके, -1 to 1 कर दिया, यहां तक आ गए हम लोग. इज दैट क्लियर और नॉट? x के माइनस x रिप्लेस कर दो बस, या x के माइनस t रिप्लेस कर दो, माइनस dt, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, एक माइनस है, एक नेगेटिव आगे लो, 0 से 1 खत्म. अब हम जान रहे हैं कि m भी इवन है और n भी इवन है, तो pm माइनस x क्या होगा? pmx. pn माइनस x क्या होगा? pnx. So this is equivalent to writing integration from 0 to 1 pmx pnx dx equal to 0. खत्म. इट इम्प्लाइज अगर m इवन होगा और अगर n भी इवन होगा तो हमारा ये वाला इंटीग्रेशन विल बी 0. इसका मतलब क्या हुआ? अगर m माइनस n निकालने की कोशिश करोगे, अगर दो इवन क्वांटिटीज हैं तो इनका डिफरेंस भी क्या आएगा? इवन नहीं आएगा. और दोनों डिफरेंट है तो क्या नॉन जीरो इवन नहीं आएगा? कुछ सोचो. हाँ या ना? इस वाले स्टेप के अंदर ना हमने जैसे माइनस एक्स रिप्लेस किया, तो पहले टर्म में किया, दूसरे में नहीं किया. ओके, किया. इधर देखो, किया. कीप x इक्वल टू माइनस टी. सो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा pm माइनस टी, ये हो जाएगा pn माइनस टी. यहाँ dx जगह आएगा माइनस dt. इस माइनस को भूल जाओ, यहाँ पे लगाओ 0, यहाँ पे लगाओ 1. अब अगर मेरा फंक्शन m इवन है तो हमने पढ़ा था pm माइनस x क्या आएगा? pm x ही तो हो जाएगा. तो यहाँ राइट. पर ये हो जाएगा 0 to 1 pmt. this will be pnt dt. dt की जगह dx लिख दो. so this will be like this only. is that clear? हाँ भैया. सिमिलरली अगर ये वाला ही स्टेप याद रखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कम समय रह गया इसलिए. सो दिस इज pm pn, यहाँ पर x था, यहाँ पर x था, dx. एंड थिंक अबाउट इट, अगर मैं यहाँ -1 to 0 करता हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता, टाइम निकल रहा है. चलो कोई बात नहीं, फिर हम इसको कल करेंगे. क्या कर सकते हैं? if this is the case, now try to think if m is odd and n is odd. Think about it and we'll continue tomorrow then. Take these two cases. If m is odd and n is odd, both of them are odd, then what? So you'll find that this will also solve your problem. So I'll solve that thing in a separate thing. So I think this is quite enough. Is that clear? हाँ. So if you take both, if you take